Hi students, Rizwan. Today I am going to teach you two important structures. If you want to speak fluently, so you have to know tenses, basic definitions, some vocabulary and structures. Then you can speak fluently. So that's why today I have brought two important, very important structures in which we call in Urdu ज़्यादा से ज़्यादा. ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको मारेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको क्लास से निकालेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको वो स्कूल से निकालेगा. We use this anytime. फिर दूसरा है हमारे पास अगर मेरा बस चले. अगर मेरा बस चले मैं उसको क्या मारूंगा. अगर मेरा बस चले मैं अपनी जान दे दूंगा. अगर मेरा बस चले मैं उसको करोड़ों रुपए दूंगा. तो how can we use these two structures? फर्स्ट, अगर मेरा बस चले, इसका फॉर्मूला कैसे हो सकता है. इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस वेज. अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, if plus subject plus have or has plus ways. After that we will make sentence. सेंटेंस कैसे बना सकते हैं इसका. If I have my ways, I will beat him. If I have my ways, I will beat him. अगर मेरा बस चले मैं उसको मारूंगा. अगर मुझ में इतनी पावर हो, फोर्स हो, तो मैं इसको क्या करूंगा, मारूंगा. फिर इसका नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास. इफ शी हैज हर वेज, she will leave the school. If she has her ways, she will leave the school. अगर उसकी बस चले वो स्कूल छोड़ेगी. बस नहीं चलता है, parents are not allowing her to leave the school. In most cases, always we are speaking using in our speaking power. अगर मेरा बस चले, but the students cannot pronounce the students don't know how can we make sentences of this. If plus subject, then have, has plus ways. After that you can make future indefinite sentence. इसके बाद है हमारे पास ज्यादा से ज्यादा. We can say it at the most. At the most, ज्यादा से ज्यादा. At the most you can use at last of sentence or at the beginning of sentence. जुमले की शुरुआत में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो और आखिर में भी इस्तेमाल कर सकते हो. कैसे? For instance, at the most she will shout at you. At the most she will shout at you. ज्यादा से ज्यादा वो आप पे चिल्लाएगी. Did you get this sentence? After that we have second example. At the most he will kick out you from the school. At the most he will kick out you from the school. ज्यादा से ज्यादा वो आपको स्कूल से निकाल देगा. These two structures we are using in our speaking power. Speaking के लिए क्या क्या जरूरी है? Tenses, basic definitions, vocabularies, daily routine vocabularies,
I have given 2 lectures on important vocabularies. And structures are very crucial for everybody if you want to speak fluently. So hope that whatever I have taught in today's lecture you have understood. Thanks for watching me.